So, good afternoon, students. We were discussing about procedure to determine the Q, how this Q, right, is determined, right? Now, let's say, for example, we have a mixture of A plus B liquid, all right? So, let me also mention its concentration. For example, right? For example, let's say this is A and B having 50% A and 50% B. For example, it has a 50% A, right, or 50% B. Let's say, for example, this is a in terms of mole fraction, 0.5 mole fraction A and 0.5 mole fraction B, for example, right? Now, if we heat this substance, let's say initially it has a temperature, let's say it is at 50 degree, let's say normal temperature, for example. Now, let's say 30 degree centigrade, for example, this mixture, let's say this is 30 degree centigrade, for example, right? Now, it is called as a liquid condition. It is at liquid condition. So that's why it is called as a subcooled liquid, right? Subcooled liquid, right? But now if we heat the substance, right, now its temperature increases. Its temperature increases, right? Now one point is reached, right? For example, this is the temperature. Let's say this is a for example 70 degree centigrade, right? 70 degree centigrade, for example. Right now 70 degree, let's say when first bubble appears, right? Now, as we know that A is a more volatile component, and A is a more volatile component, right, than B. So in this vapor, right, in this vapor, right, vapor contains more than 0.5. Let's say 0.55. Just example, in vapor, right, A, right? Let's say this is a Y. We write it as a Y because generally Y is the mole fraction of A in vapor. Let's say this is here. It is, let's say, for example, here it is somewhere 0.55. So this is Y. Definitely in this liquid, A will be less than 0.55. Let's say it is 0. Just example 45, 0.45 somewhere here, 0.45, right, which boils at equilibrium, right? At equilibrium, what does it equilibrium means? Then the rate of boiling is same as the rate of condensation, which is called as equilibrium. And if this at this condition, when rate of boiling same as the rate of condensation, right? Because some amount of this water, vapor molecules again condense back, again condense back. So if this situation, equilibrium condition is reached, right, then this mixture will boil at a constant temperature. Let's say this is a 70 degrees temperature, for example, right, 70 degrees centigrade. मतलब जब आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपोराइजेशन सेम होता है, ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा. लेट्स से 70 डिग्री पे. फिर उस कंडीशन पे आप वेपर में ए का कंसंट्रेशन मेजर करें, मोल फ्रैक्शन, लेट्स से इट इज 0.55, लेट्स से इज समवेयर 0.55. दिस इज वाई, राइट? एंड आप अगर आप लिक्विड का भी आप लिक्विड में भी आप ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, लिक्विड में भी, लेट्स से इट इज 0.45 फॉर एग्जांपल, 0.45, which is boiled at constant temperature. So this is a composition of liquid. That is A in liquid. Let's say it is here 0.45. All right. So this is called as a one tile line.
right? Where this is vapor, this is a liquid and it is boiled at a fixed temperature. बट मैंने अभी क्या लिया है कि यहाँ पे 50-50 लिया है फीड में, दिस इज फीड. Now let's say I am changing the feed. Let's say I am taking 40% A, right, and 60% B. That means अभी देखो, अभी आप देख सकते हो कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट उसका फीड में कॉन्सेंट्रेशन कम है. दिस इज फीड, राइट? सेम हियर, दिस इज फीड यहाँ पे, ठीक है. तो एज दी मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन कम है, मोल फ्रैक्शन. तो ये मतलब बी ज्यादा है, बी आपका लेस वोलेटाइल है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी वो ज्यादा है. तो ये मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे है, राइट? इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर ग्रेटर देन 70 पे वो बॉइल होगा, ग्रेटर देन 70, ठीक है. तो आपका फीड में ए 60% है, मतलब सॉरी ए 40% है, मतलब मोल फ्रैक्शन है, ओके, ये मोल परसेंट है. तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? ए फीड में 0.4 होगा, ठीक है, ए होगा, राइट? और बी कितना है? 0.6, ठीक है. अब ये फीड में है, पर जब आपका जो आप हीट दोगे, वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा, वेपोराइजेशन, ठीक है. तो वेपर में पॉइंट इससे ज्यादा ही होगा, 0.4 से ज्यादा ही होगा वेपर में ए, क्योंकि ए आपका क्या है, ए आपका वेपर में ज्यादा जाएगा. क्यों ज्यादा जाएगा ए वेपर में? क्योंकि ए आपका मोर वोलेटाइल है, ठीक है, मोर वोलेटाइल है. तो लेट्स से दिस इज आफ्टर रीचिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन कब? जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज सेम एज द रेट ऑफ कंडेंसेशन, तब हम मेजर करते हैं, मेजर, ठीक है. तो which will it can be boiled, let's say it is 80 डिग्री पे बॉयल होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है. तो लेट्स से आपका जो वेपर है, अभी वेपर में है 0.45 है फॉर एग्जांपल, लेट्स से 5 है फॉर एग्जांपल, 5 लेट्स से 0.5 है फॉर एग्जांपल, लेट्स से 5, ठीक है. एंड लेट्स से लिक्विड में लेट्स से इट इज 0.45 फॉर एग्जांपल, राइट? बिकॉज सी ए इज दिस एक्स एंड वाई इज नथिंग बट दी ए का लिक्विड और वेपर में कंपोजिशन, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि वेपर में जो ये और ये वन होना चाहिए, ऐसा नहीं है. इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है. मान लो कि फॉर एग्जांपल लेट मी राइट हियर y इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जांपल 5 है, राइट? x है फॉर एग्जांपल, लेट्स से इट इज पॉइंट, लेट्स से उससे भी कम है, लेट्स से 3.5 फॉर एग्जांपल, ठीक है. ये वेपर का कंपोजिशन है, ये लिक्विड का कंपोजिशन है, विच इज बॉइल एट 80 डिग्री, ठीक है. अभी इन दोनों का समेशन 1 हो ऐसा नहीं है, इसका समेशन 1 हो ऐसा नहीं है. ये 0.5 है, ए है फॉर एग्जांपल वेपर में, तो बी कितना होगा वेपर में? इज इक्वल टू 0.5 होगा बी वेपर में, ठीक है. सिमिलरली ये मेरा ए है, ये 0.35 है, ये किसमें है? लिक्विड में है, ये लिक्विड में है, 0.35 लिक्विड में है, क्या ए है. तो ए मेरा लिक्विड में 0.35 है लिक्विड में, तो बी कितना होगा? 0.65. मेक श्योर दैट, ठीक है, इन दोनों का 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है. तो एक्स और वाई का ठीक है 1 हो ऐसा नहीं है, 1 हो ऐसा नहीं है, मेक श्योर, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो ये दिस इज बॉइल एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतना हुआ 0.35, लेट्स से समवेयर हियर 0.35, right? So you can also conduct the experiment with different A and B. अगर आप कम करते जाओगे तो ये पॉइंट्स यहाँ आएंगे, ऐसे यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट? सॉरी यहाँ पे, हाँ, यस, लेट्स से 90 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप ज्यादा ले रहे हो, लेट्स से यहाँ पे मैं
70 ले रहा हूँ, राइट, 70 ले रहा हूँ और 30B ले रहा हूँ, 30B फीड में, ठीक है। तो ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा, क्योंकि हम फीड में ही एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे मिलेगा। So in short, we will get like this type of curve, right? This type of curve, right? Like this, right? So this is called as a TXY diagram. I think you TXY diagram you already studied, right? In I think BTech level, ठीक है। So यहाँ पे 5 रीजियन है, 5 रीजियन, ओके। मुझे अलग फिगर में एक्सप्लेन करने दो। राइट, ऐसा लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कब आया, राइट, ठीक है। सो हियर there are 5 regions, right? 5 regions according to how we give heat and vaporize the liquid. Okay, suppose यहाँ पे कोई point है, यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा T है। Now you only see the y-axis, लेकिन ये temperature है। So this point is this region, right? This region, whole region, right? Whole region is called as a subcooled liquid, right? Subcooled liquid, right? So here at this point where vaporization start, right? Vaporization start is called as a here. All this point, right? Anyway, any point on this curve is called as a saturated liquid. Saturated liquid, right? Now any point on this curve, right, which is called as a saturated vapor, saturated, sorry, saturated vapor, right? इस point पे now all this region, कोई भी region है, right, that is called as superheated vapor, superheated vapor, right? Now anything inside this curve like this, यहाँ पे कोई भी region पे, right, that is called a partially vaporized here. Partially vaporized, and that means it is a mixture of liquid and vapor, mixture of liquid and vapor, okay. So what we did, we have taken the mixture at this let's say 30 degrees centigrade, for example, giving heat. This point is come when vaporization starts, right? Vaporization is starts यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिक्स, ठीक है। That means A and B, right? A plus B, यहाँ पे इस टेम्परेचर पे, right, वेपोराइजेशन स्टार्ट होता है। Let's say this is 30 degree centigrade. Let's say this is 50 degree centigrade.
vaporization start. That's right. That means at this point, right, giving heat will convert it into vapor, right? Convert it into vapor. But if we remove this heat, then it will again turn back to the liquid. That's why it is called as a saturated liquid. ठीक है. Now still we are giving heat. ठीक है. यहाँ पे जैसे ऊपर जाओगे, that means more and more liquid, right? More and more liquid that is vaporized like this. यहाँ पे आप हीट दे रहे हो तो क्या कर, सपोज कि यहाँ पे इनिशियली इतना लेवल है, फॉर एग्जांपल वी आर कंटिन्यू सप्लाइंग हीट. ठीक है, सप्लाइंग हीट मतलब यहाँ पे लिक्विड भी है, यहाँ पे वेपर भी है, यहाँ पे. दैट्स व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ पार्शियली वेपोराइज्ड, राइट? मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. It's very important, right? Partially vaporized means a mixture of liquid plus vapor. This is the condition. Mixture of liquid plus vapor. So still heating, giving more and more heat. ठीक है, ये लेवल कम होता जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि वेपर की अमाउंट बढ़ती जाएगी यहाँ पे, वेपर की अमाउंट. ठीक है, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पॉइंट जहां क्या होगा, ऑल लिक्विड, राइट, ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर. मतलब यहाँ पे आपका जो कंटेनर है, कंटेनर उसमें क्या होगा, सिर्फ वेपर होगी, ओनली वेपर. जितना भी आपका लिक्विड होगा वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा. दिस इज राइट वेपर. दिस इज द पॉइंट, राइट, दिस इज द पॉइंट यहाँ पे. ठीक है, ये वेपर है. मतलब क्या है कि इतना टेम्परेचर पे लेट्स से यहाँ पे मैं, दिस इज रैंडम, आई एम टॉकिंग रैंडम टेम्परेचर. लेट्स से दिस इज द 80 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट एग्जांपल. सो 80 डिग्री टेम्परेचर पे पूरा का पूरा मेरा क्या है, वेपर ही है. ठीक है ना. यहाँ पे रिमूविंग स्लाइट हीट, लेट्स से यू रिमूव स्लाइट हीट. तो क्या होगा, दैट मीन्स ये वेपर है, वेपर वो कंडेंस होना चालू हो जाएगा. दैट विल कंडेंस. That's why this point, right, this point what is called as a saturated vapor point, right? Saturated vapor. और ये अलग अलग पॉइंट तो क्या है कि अलग अलग फीड के कंपोजिशन के हिसाब से को मिलेंगे, राइट? बट अगर हम उससे भी ज्यादा हीट अभी इस पॉइंट पे है 80 डिग्री पे, और ये पूरा का पूरा वेपर है, मेरा पूरा का पूरा वेपर है, अभी मैं और हीट देता हूं, और हीट, तो ये वेपर का तो वेपर ही रहेगा. ठीक है, वेपर का वेपर ही रहेगा. ठीक है, बट उसका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा, लाइक दिस, राइट, लाइक दिस. लेट्स से दिस इज दी, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो मान लो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ये यहाँ पे है. ठीक है, अगर उसमें से मैं स्लाइटली हीट में रिमूव करूंगा, हीट रिमूव, तो कंडेंस नहीं होगा. ठीक है, उसका जस्ट टेम्परेचर रिड्यूस होगा. जैसे अभी इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे जैसे उसका मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, अगर मैं उसका हीट रिमूव करता हूँ, हीट रिमूव करता हूँ अगर फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे ओनली टेम्परेचर रिड्यूस, बट ये मेरा वेपर जो वेपर रहेगा. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ सुपर हीटेड वेपर. ठीक है, अगर मैं हीट रिमूव करूंगा तो 100 की जगह क्या होगा, लेट्स से वो 95 होगा. अब स्टिल आई एम रिमूविंग हीट, तो लेट्स से 90 डिग्री, मतलब इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है. ठीक है, फिर एग्जैक्टली 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री. अभी मैं और हीट रिमूव करता हूँ. ठीक है, और हीट. ठीक है, तो वो क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ सैचुरेटेड वेपर कर्व. I hope it is clear to all, right? So this is the 5 type of conditions of any liquid to vapor mix, any from liquid to superheated vapor, right? Now come to our point. Here we define Q is equal to Hg minus Hf, right, divided by Hg minus Hl, where
where, let me write here hg is equal to at enthalpy of right, hg, right, that is the saturated vapor, sorry, saturated, right, vapor, right, saturated vapor, right, and h f is equal to enthalpy of feed, and enthalpy of feed, right, and HL is equal to enthalpy of saturated, right, liquid, right, saturated liquid. So let me show you in this graph, right, let me show you in this graph. Now Hg, enthalpy of saturated vapor, right, which is the saturated vapor line? Yes, this one, saturated vapor line. Here we will have Hg, right, here we have Hg, right, and here we have HL, so it is a saturated liquid, right, HL is the enthalpy of saturated liquid, HL यहाँ पे, right, so this Hg minus HL, right, this Hg minus Hg minus HL, ये this is saturated liquid to saturated vapor, right, what is it is called, तो बताएगा, this is called the latent heat of vaporization, lambda, right, lambda, right, so Hg minus HL, right, मतलब यहाँ पे is equal to lambda, right, that is latent heat of vaporization, right, latent heat of vaporization, right, मतलब यहाँ पे हमारा लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड से फिर उसको मुझे वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मतलब इतनी हीट मुझे चाहिए, यहाँ से लिक्विड से वेपर तक लाने के लिए मुझे जितनी हीट चाहिए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट, द हीट रिक्वायर्ड फॉर फेज चेंज और टू कन्वर्ट दिस टोटल लिक्विड टू टोटल वेपर, that is called as a latent heat of vaporization, lambda, all right, sorry, right, now this in this equation Hg we know, HL, okay, that is the latent heat of liquid, and HF is the enthalpy of feed, right? Enthalpy of feed, right, and this feed may be anything, it may be a subcooled liquid also, right, feed may be subcooled liquid also, feed may be saturated liquid also, right, feed may be partially vaporized also, feed may be saturated vapor also, and feed may be superheated vapor also, राइट, फिर यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड भी हो सकती है, तो वो मिक्सर भी हो सकता है लिक्विड और वेपर का, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर भी हो सकती है और सुपरहीटेड वेपर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है फिर, राइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, राइट, दिस डिनोमिनेटर, राइट, डिनोमिनेटर maybe we can also call it a latent heat of vaporization. So let again we define Q is equal to, right, let me define Q again, right, Q is equal to
in the denominator we have Hg minus HL, which is the lambda, right? So let me write here latent heat of vaporization, right? Latent heat of vaporization, right? That is, let's say, lambda. This is the denominator. What about the numerator, right? So HF may be anything. ठीक है, फीड का एंथैल्पी कोई भी हो सकता है, राइट? फीड का एंथैल्पी कोई भी हो सकता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी फीड है, फीड, राइट? यहाँ पे है सब कुल लिक्विड है. लेट्स से यहाँ पे है फीड, राइट? यहाँ पे फीड, यहाँ पे है फॉर एग्जांपल. दिस इज लेट्स से मेरी HF फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो HF, राइट? HF2 कहां तक मेरी एनर्जी देनी है मुझे उसको? यहां तक, Hg तक. ये सब मेरे यहाँ पे Hg ही है, Hg, ठीक है? यहां तक. तो मतलब क्या है कि द न्यूमरेटर टर्म विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, राइट? टू कन्वर्ट 1 mole of feed to saturated vapor, right? ठीक है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of feed to saturated vapor, बिकॉज ये मेरा Hg है, मेरा सैचुरेटेड वेपर है. यहाँ पे Hg, ये मेरा पूरा का पूरा सैचुरेटेड वेपर है ये, ठीक है? बिकॉज इट इज Hg माइनस HF, Hg माइनस HF, ठीक है? कोई भी फीड हो, ये इतना हो, इतना, तो भी मुझे कहां तक ले जाना है? सैचुरेटेड वेपर तक. अगर मेरा सब कुल लिक्विड है तो भी मेरा सैचुरेटेड वेपर तक ही जाना है, मुझे यहां तक ही ले जाना है, ठीक है? तो लेट मी राइट हियर अ न्यूमरेटर टर्म, राइट? एनर्जी, राइट? एनर्जी required, right, to convert, right, convert 1 mole of feed, 1 mole of feed, right, to saturated vapor, right? Saturated vapor, right? Saturated vapor, right? So let's say 5 type of feed. Let's say 4 sub-cooled liquid, right? 4, right? Sub-cooled liquid, right? Sub-cooled liquid. Let's say, what about the Q, right? What about the Q? Let's see, right? So for sub-cooled liquid, ठीक है, HF है, HF यहाँ पे होगा. एंथैल्पी ऑफ फीड इतनी होगी बिकॉज़ दिस इज सब-कूल्ड रीजन, ठीक है? तो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मुझे एनर्जी चाहिए, दैट इज द न्यूमरेटर, ठीक है? डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है? तो ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे HL है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय HL, तो दिस इज माय डिनोमिनेटर, ये इतना मेरा डिनोमिनेटर है. और न्यूमरेटर कितना है? Hg माइनस HF, तो वो ज्यादा है, दैट मीन्स मेरा Q होगा, Q वो ग्रेटर देन 1 होगा, ये मेरा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा मेरा, ठीक है? क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम सबकूल्ड लिक्विड टू सैचुरेटेड वेपर विल बी हाई, राइट? यहाँ से यहाँ तक मतलब एनर्जी लाने के लिए मुझे एनर्जी ज्यादा मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये 30, मान लो कि ये 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, 30 डिग्री, ठीक है? और ये मेरा 100 है, ठीक है? तो 30 to 100 को कन्वर्ट करने के लिए मुझे ज्यादा वेपर देना पड़ेगा एज कंपेयर टू ये मेरा, फॉर एग्जांपल ये मेरा अगर मेरा 65 है फॉर एग्जांपल, तो 65 to 100,
उसके लिए मुझे एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। सो मेरा ये न्यूमरेटर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मेरा न्यूमरेटर ज्यादा है, राइट, न्यूमरेटर ज्यादा है ये वाला एज कंपेयर टू दिस डिनोमिनेटर, ठीक है। सो Q इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, Q इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक है। नाउ फॉर सैचुरेटेड लिक्विड, राइट, सेकंड for saturated liquid, right, liquid, right, what about the value of Q, right? Now for saturated liquid के लिए, right, this is about feed, right, this is a feed condition. Let me write here feed condition, ये सब feed के लिए है, feed condition, right, feed conditions. Now for the saturated liquid, very feed होगी, feed कहाँ पे होगी, feed saturated liquid condition पे, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पॉइंट पे है, यहाँ पे, तो ये मेरा क्या होगा H, कोई भी यहाँ पे मेरा HF होगा, राइट, कोई भी पे यहाँ पे HF इस यहाँ पे मेरे HF होगा, लेट्स से दिस इज माय HF, तो मेरी फीड है वही मेरी सैचुरेटेड, फीड है मेरी वही मेरी सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड। तो कैन वी से दैट HF इज इक्वल टू HL, यहाँ पे HF इज इक्वल टू HL, HF इज इक्वल टू HL, ठीक है, क्योंकि मेरी फीड ही मेरी सैचुरेटेड लिक्विड है। तो अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में आप HF इज इक्वल टू HL पुट करोगे, यहाँ पे HF इज इक्वल टू HL, तो HL इज इक्वल टू HF होगा आपका HF, ठीक है, तो ऊपर और नीचे का कट हो जाएगा, तो Q क्या होगा, Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, Q इज इक्वल टू 1 होगा, क्यों Q इज इक्वल होगा, क्योंकि मेरा HL है, HFL है, वही मेरा क्या है HF, एंथैल्पी ऑफ फीड है, वही मेरा एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड है, ठीक है, बिकॉज मेरी फीड है, फीड की कंडीशन क्या है, मेरी सैचुरेटेड लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है। नाउ थर्ड वन, लेट्स से फॉर एग्जांपल थर्ड for saturated vapor, right, saturated vapor, right, what about the Q, right? Now saturated vapor पे अगर मेरी फीड है, फीड वो मेरी saturated vapor है, फीड ही मेरी saturated vapor, तो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे मेरी फीड है, यहाँ पे मेरी फीड है, हियर इट इज इस पॉइंट पे वो मेरी HF है, तो कैन वी से दैट HF इज सेम एज द HG, HF इज सेम एज द HG, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन पे HF इज इक्वल टू HG पुट करोगे, यहाँ पे लेट मी पुट हियर HF इज इक्वल टू HG, तो क्या हो गया HG माइनस HG, तो Q इज इक्वल टू 0, लेट मी राइट Q इज इक्वल टू 0, ठीक है, Q इज इक्वल टू 0, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ, राइट। नाउ fourth condition is right, for a superheated vapor, let's say what about the value of Q, for example, right? So for the superheated vapor, मतलब कौन सा रीजन, ये रीजन है, ये रीजन, जैसे हियर यहाँ पे मेरा HF है, मतलब इन दिस केस
for the saturated, if the my feed is at superheated vapor, so what does it mean? My HF, enthalpy of feed, is greater than Hg, and HF is greater than Hg. ठीक है, but what is the value, what we define Q, यहाँ पे Q हमने क्या डिफाइन किया है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ फीड टू सैचुरेटेड वेपर, मतलब जो भी फीड है, ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए कहां तक ले जाने के लिए, सैचुरेटेड वेपर तक ले जाने के लिए, मतलब उतना हमें हीट देना पड़ेगा, हमें ले जाना कहाँ है, सैचुरेटेड वेपर तक ही ले जाना है, Hg तक। बट यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी ज्यादा वेपर है, यहाँ पे ज्यादा वेपर है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया कि इस डायरेक्शन में गए, कौन सी डायरेक्शन में, कि कोई भी यहाँ पे फीड हो, कोई भी यहाँ पे फीड, हमें उसको एनर्जी दे के हमें कहां तक ले जाना है, उसे सैचुरेटेड वेपर तक। बट यहाँ पे कैसा केस है कि मेरी ऑलरेडी मेरा ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी है फील्ड में, ठीक है, तो उसको हमें ले कहां तक ले जाना है, Hg तक, और मेरी उसमें यहाँ पे ज्यादा वेपर एनर्जी है, तो क्या होगा अभी कि मेरी जो हीट है, ठीक है, वो उसमें से रिमूव होगी, हीट रिमूव होगी, ठीक है, रिमूव होकर कहां तक आएगी, Hg तक। दिस इज ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हीट रिमूव हो रही है, ठीक है, हीट रिमूव हो रही है, ठीक है, दैट्स व्हाई इन दिस कंडीशन माय Q इज नेगेटिव, राइट, Q इज greater than 0, negative, right, and last one is the, right, for partially vaporized, right, partially vaporized, right, so Q is between 0 to 1, Q है वो फ्रैक्शन होगा आपका, राइट, फील्ड का फ्रैक्शन होगा, दैट मींस इट विल बी बिटवीन 0 to 1 फॉर पार्शियली वेपोराइज्ड, ठीक है। सो हियर लेट्स से फॉर एग्जांपल, फॉर सैचुरेटेड लिक्विड दिस इज फिक्स्ड, राइट, फॉर सैचुरेटेड वेपर अगेन इट इज फिक्स्ड, राइट, अगेन इट इज फिक्स्ड, राइट। नाउ व्हाट अबाउट फॉर सबकूल्ड लिक्विड, Q is greater than 1, here it is exactly 1, exactly 1, it is exactly 0, exactly 0, but here यहाँ पे Q less than 1 है, कितना less than 1, exact, what is the exact value, similarly here Q is less than 0, लेकिन कितना value, कैसे find करेंगे हम, right, so let's say we have Q is equal to, we already have Hg, at Hg minus HF, this is the same equation, at Hg, let's say this is, I will write is a lambda, let's say write first Hg minus HL, and Hg minus HL, so I can write this equation as Hg minus HL plus HL, I am adding HL and subtracting, also simultaneously subtracting by HL, right, minus HF, right, divided by, this is the lambda, Hg minus HL is lambda, again this is Hg minus HL, it's lambda, which is equal to H, this is lambda plus this Hg, this is the HL minus HL minus HF, this is enthalpy, right, joule or kilojoule per kg, right. So this enthalpy we can also written as, this enthalpy we can also write as
H is equal to, this is the enthalpy. Enthalpy, right? H is equal to, right, Cp, right? Cp, it is not a Cp, but it is in subscript. Cp into delta T. You can also write Cp into delta T, where Cp is the specific heat, right? This is called as a Cp into T. I think it is a T, right? But let's say this is a difference, right? Enthalpy difference. Let me write. I'm directly write difference. This enthalpy HL minus HF, right? This is a specific heat, and this is the temperature difference, right? So this is kilojoule, right, per kg into, let's say, Kelvin or centigrade, whatever. Let's say I'm writing in centigrade, degree centigrade, into delta T, temperature in degree centigrade, right? Multiply, right? This centigrade, again that will get cancelled out. Again that will get cancelled out. So this is the kilojoule per kg, right? Kilojoule per kg, which is same, is nothing but the enthalpy, right? Enthalpy. All right, but here as it is a liquid, right? As it is a saturated liquid, right? Now this is was CpL, liquid, right? And what about this delta T? What about delta T? Right? This is the enthalpy of saturated liquid, right? And saturated liquid is always at bubble points. Saturated liquid is always at a bubble point, right? And this is this enthalpy of feed, right? Enthalpy of feed. All right. So this delta T also we can write as here. Delta T is enthalpy of सैचुरेटेड लिक्विड. यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड है HL, ठीक है? तो वो टेम्परेचर कौन सा होगा? बबल पॉइंट T टेम्परेचर होगा, बबल पॉइंट टेम्परेचर डेल्टा T के लिए. सो यू कैन राइट CpL, right, into temperature of a bubble point, right, minus HF, that is the feed temperature of feed, because HF is nothing but the enthalpy of feed, and we are talking about the for subcooled liquid. Q, okay, Q is greater than 1, right? Q is greater than 1. Okay, so let me write here. It is a lambda plus, this is the lambda, right? Lambda plus CpL, lambda plus this HL minus, I'm talking about the HL minus HF, right? Cp of liquid, right? Cp of liquid, right, into delta T, but it is here temperature of bubble point temperature minus temperature of feed, right? Temperature of feed divided by this lambda, This is about the Q. कुछ नहीं है अभी, right? So this is for, right? This is for, this equation is for subcooled liquid, right? For subcooled liquid, right? Subcooled liquid, temperature of bubble point minus temperature of feed. All right, because for the subcooled liquid you can see that HF is the enthalpy of feed, and for the subcooled liquid enthalpy of feed is always less than, right, less than the bubble point,
the enthalpy of this saturated liquid. This is the bubble point temperature. This is the bubble point temperature HL. जहाँ पे HL होगा वही मेरे यहाँ पे टेम्परेचर होगा HL. ठीक है. So for this is equation is for saturated liquid. सॉरी सबकूल्ड लिक्विड. यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आप Q is always greater than 1 आप फाइंड करोगे. तो सैचुरेटेड लिक्विड कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली यू कैन टेक Q is equal to 1. फॉर सैचुरेटेड वेपर राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक डायरेक्टली Q is equal to 0. राइट फॉर सुपरहीटेड वेपर, राइट फॉर द सुपरहीटेड वेपर, देखो यहाँ पे सुपरहीटेड वेपर है, यहाँ पे सुपरहीटेड वेपर है. राइट तो इस पॉइंट को कहाँ ले जाना है मुझे, यहाँ पे ले जाना है. ठीक है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरा ये क्या होगा यहाँ पे अभी HF, राइट HF इज बिकम्स द एंथैल्पी ऑफ वेपर, राइट सुपरहीटेड वेपर, राइट सुपरहीटेड वेपर. तो उसके लिए अभी मुझे Hg तक ले जाना है, Hg तक. ठीक है. तो डिनोमिनेटर में तो फिक्स ही है मेरा, राइट डिनोमिनेटर तो फिक्स ही है मेरे यहाँ पे ये वाला. ठीक है. तो लेट मी राइट हियर Q is equal to, at Q is equal to, at in the denominator we will have lambda, right, and Hg minus Hf again is the it is same as this Cp into delta T, right? But here it is a HF, both this HF is a vapor, right, sorry feed is a vapor and it is a saturated vapor. Right, so instead of Cp liquid, we will have Cp vapor, right? Cp into vapor, right? Into temperature difference delta T, right? What should be the delta T into, right? Now this should be negative. Make sure, right? Make sure this should be the negative, right? So it must be T temperature into saturated vapor, right? So it is also called as a dP, dew point temperature, right, minus temperature of feed, right, temperature of feed, right. So this is for right super heated and vapor, right, superheated vapor. See, temperature of feed, right, is always greater than dew point temperature. यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे this is the यहाँ पे कुछ एंथैल्पी होगी फीड की, because for we are talking about the superheated vapor. We are talking about the superheated vapor. उसका टेम्परेचर डेफिनेटली यहाँ पे Hg से ज्यादा ही होगा, टेम्परेचर ज्यादा ही होगा. ये मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, यहाँ पे ड्यू ये बबल पॉइंट है. ठीक है, बबल पॉइंट कर्व, ये ड्यू पॉइंट कर्व है, राइट. सो लेट मी राइट हियर, यहाँ पे अभी मैं रह गया था एक बात करने के लिए. दिस कर्व इज कॉल्ड एज अ, राइट, बबल पॉइंट कर्व, बबल पॉइंट कर्व, right, and this curve is also known as, right, this is a saturated vapor curve or line. This is called as a dew point, right, dew point curve. This is the dew point curve, this is the bubble point curve, right. So this is the temperature, dew point temperature minus, अगर मैं जो dew point temperature माइनस टेम्परेचर ऑफ फीड करूंगा यहाँ पे, देखो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो कम है, इससे कम है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ फीड फॉर सुपर हीटेड वेपर. ठीक है. तो अगर मतलब ये माइनस ये करूंगा तो दिस इज विल बी नेगेटिव. ठीक है. टेम्परेचर ऑफ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर माइनस फीड टेम्परेचर करूंगा मैं, ठीक है, सुपर हीटेड वेपर के लिए, तो ये मेरा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा. ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ फीड लिया, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ फीड है, ठीक है, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ड्यू पॉइंट. देन एंड ओनली दिस वी विल गेट दिस, इट इज इन नेगेटिव, ये नेगेटिव में आएगा. ठीक है. एंड फॉर द सुपरहीटेड वेपर, ठीक है, वी नो दैट Q इज लेस देन
0, right? Q less than 0. So if you know the value of specific heat of vapor, blended heat of vaporization, and this both two temperature, then we can get exact value of Q, exact value of Q, right? And for the लास्ट वन एक ही बाकी रह गया है मेरा। देखो ये मैंने कैलकुलेट किया अभी यहाँ पे फॉर सैचुरेटेड लिक्विड, फॉर दिस इज फॉर सैचुरेटेड लिक्विड। क्यू हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्यू डायरेक्टली 1 होगा। सैचुरेटेड वेपर के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। फॉर सुपरहीटेड वेपर अभी मैंने ये कैलकुलेट किया यहाँ पे सुपरहीटेड वेपर के लिए, ठीक है। अभी लास्ट बच गया partially vaporized, right? Partially vaporized, where Q is equal to 0, less than Q is in between 0 to 1, right? In between 1. So again here Q is nothing but the for partially vaporized feed, right? For partially, right, vaporized feed, and for partially vaporized feed, all right, we have Q is in between Q, right? But let me write here Q partially vaporized feed, right? Q is fraction of, right, fraction of feed which is liquid, right? Which is liquid, ठीक है। तो आपका इसमें जितना भी लिक्विड का फ्रैक्शन है वो मेरा Q होगा, Q होगा। फॉर एग्जांपल, राइट, फॉर एग्जांपल लेट्स से मिक्सचर, राइट, फीड मिक्सचर, राइट, फीड मिक्सचर, राइट, which let's say contains, right, let's say it contains 40% vapor, right, and let's say 60% liquid, right, 60% liquid, right. I'm talking about the condition of fluid. 40% vapor है and 60% liquid है, for example. So as per the definition, Q is the fraction of feed, right, fraction of feed which is liquid. Okay, तो कितना परसेंट है लिक्विड का? 60% है। So in that condition we will have Q is equal to simply 0.6, right, 0.6, right. So this is all about the value of Q, right, value of Q. All right, now so let's take a break. So we'll meet exactly after 10 minutes. That means we will meet at 1:15, right, 1:15. सर, yes, बोलिए सर આપણે આ લેટેન્ટ હીટ તો કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર એડ ના કરીએ સર આપણે? ના, સોરી, આપણે લેટેન્ટ હીટ કોને કહેવાય? કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર એડ કરીએ ફેઝ ચેન્જ કરવા. તો આમાં ટેમ્પરેચર કેમ બદલે છે? હે, આમાં આપણે ટેમ્પરેચર બદલાવીએ છીએ ને વેપોરાઇઝેશન માં, લેટેન્ટ હીટ ઓફ વેપોરાઇઝેશન. નહીં, ટેમ્પરેચર નો ટેમ્પરેચર ફિક્સ ટેમ્પરેચર થાય છે તમારે, ફિક્સ ટેમ્પરેચર. ફોર એક્ઝામ્પલ જનરલી તમારું કોઈ પણ માનો કે શું કહેવાય એક લિક્વિડ હોય, લિક્વિડ, બરાબર કે નહીં, એનું જે ફેઝ ચેન્જ થાય છે, ફેઝ ચેન્જ એટ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર, રાઈટ. પણ ખાલી અહીંયા શું છે, અહીંયા 1 મિનિટ, લેટ મી શેર અ સ્ક્રીન. Let me share a screen. एक मिनिट. हाँ, અહીંયા. So અહીંયા તમારું, અહીંયા શું છે તમારું, ફોર એક્ઝામ્પલ यहाँ पे कि તમારું અહીંયા તમારું જે થાય છે, બરાબર કે નહીં, એ ખાલી શું છે તમારું કે અહીંથી આ પોઝિશન ઉપર જાઓ તમે, અહીંથી આ પોઝિશન ઉપર, રાઈટ, પોઝિશન ઉપર
રાઈટ. તો ખાલી તમારું જે ફ્રેક્શન છે ફ્રેક્શન એ તમારા ચેન્જ થાય છે. બાકી તમારું મેં તમને કીધું હતું રાઈટ પહેલા શરૂઆતની અંદર તમે કે જ્યારે પણ તમારું ફેઝ ચેન્જ થાય છે રાઈટ ફેઝ ચેન્જ ત્યારે તમારું એક હોરિઝોન્ટલ લાઈન આવે છે હોરિઝોન્ટલ લાઈન. તે રીતે લાઈન તમને કહું તમને બરાબર તમને કહું મેં તમને શરૂઆતમાં તમે જોજો મારો વિડીયો આ જ વિડીયોમાં જોજો મેં એક્સપ્લેન કરેલું છે કે જ્યારે તમારું મિક્સચર તમારું શું કહેવાય બોઇલ થાય બોઇલ અહીંયા રાઈટ મિક્સચર તમારું A+B બોઇલ થાય રાઈટ બોઇલ A+B that will boil at constant temperature. તો તમારું એક તમારું અહીંયા તમારું લિક્વિડ હશે અહીંયા તમારું વેપર હશે. This is boiled at a constant temperature like this. Let's say this is the let's say 60 degree. 60 degree. તો જ્યારે તમારું ફેઝ ચેન્જ થાય છે ફેઝ ચેન્જ that will be occur at a constant temperature. રાઈટ ખાલી તમારું શું કે તમારું જે કમ્પોઝિશન છે કમ્પોઝિશન that will change. રાઈટ કમ્પોઝિશન ચેન્જ. સી અહીંયા મેં તમને અહીંયા દેખાડ્યું તમારું ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા રાઈટ અહીંયા રાઈટ તો મતલબ એ વર્ટિકલ ડિરેક્શનમાં નથી જતું આ પોઈન્ટ આવે રાઈટ આ પોઈન્ટ રાઈટ પછી તમારું આમ હોરિઝોન્ટલ જાય હોરિઝોન્ટલી. શું કામ હોરિઝોન્ટલી જાય છે કારણ કે તમારું બોઇલિંગ થાય બોઇલિંગ એ તમારું સેમ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર બોઇલિંગ થાય છે રાઈટ. પણ આ પોઈન્ટ છે એક મિનિટ આ પોઈન્ટ છે એ શું કે તમારું આપ અહીંથી બોઇલિંગ કરો તો બોઇલિંગ તો તમારું અહીંયા આમ આવે અહીંથી પછી તમે અહીંયા ફીડ લીધું હોય ફીડ તો પછી તમારું આવી રીતે આડું આવે એવી રીતે એ બોઇલ તો તમારું એક કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર જ થાય છે તમારું રાઈટ. પછી આ લાઈન છે અલગ અલગ ફીડ મિક્સચર ના લીધે છે ફીડ મિક્સચરમાં રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે હું 50% લઉં તો અહીંયા આવશે તો હું જો એ 70 લઉં 70 તો સમવેર અહીંયા આવશે અહીંયા આવી રીતે આમ. પછી જો હું એ ફીડમાં દઉં એ ફીડ હું આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ ફીડ ફીડમાં હું જો ફોર એક્ઝામ્પલ ફીડ ની અંદર હું એ છે એ ફોર એક્ઝામ્પલ હું કેટલું લઉં એ ફીડ ની અંદર હું લેટ્સ સે હું 10 જ લઉં ફોર એક્ઝામ્પલ રાઈટ અને બી કેટલું લઉં 90 લઉં 90% લઉં 90% તો મે બી પોસિબલ કે આ બોઇલ છે રાઈટ બોઇલિંગ સેમ જ ટેમ્પરેચર છે ફેઝ ચેન્જ રાઈટ. પણ જો મારું જે વેપર હશે વેપર વેપર હશે વેપર એની અંદર લેટ્સ સે 10% છે તો માન લો કે લેટ્સ સે 0.115 ફોર એક્ઝામ્પલ મોલ ફ્રેક્શન ધીસ ઇઝ ફ્રેક્શન રાઈટ. તો લિક્વિડ ની અંદર પણ મારું શું છે લિક્વિડ ની અંદર ઓછું જોવાનું છે લિક્વિડ ની અંદર ઓછું હશે ને એ આની કરતા તો ઓછું છે આની કરતા ઓછું તો લેટ્સ સે ઇટ ઇઝ 0.07 ફોર એક્ઝામ્પલ એ અહીંયા હશે મારું અહીંયા કે અહીંયા માની લો ફોર એક્ઝામ્પલ આ 0.1 લઉં બરાબર અહીંયા 0.2 લઉં એક્ઝેક્ટલી મિડલ ની અંદર લેટ્સ સે હું 0.5 લઉં બરાબર ને. તો અહીંયા મારું છે કે અહીંયા મારું ફોર એક્ઝામ્પલ 0.7 હોય અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા 0.7 બરાબર ને x કરશે ને આ મારું x છે x આખો આખો બરાબર. પછી ઈ છે ને ઈ એક જ ટેમ્પરેચરે બોઇલ થશે અહીંયા આ ટેમ્પરેચરે લેટ્સ સે 90 ડિગ્રી ફોર એક્ઝામ્પલ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ એક જ ટેમ્પરેચર બોઇલ હશે આ મારું લિક્વિડ ની કમ્પોઝિશન હશે કેટલું છે 0.07 અહીંયા 0.7 આપણે વર્ટિકલ માં જાવ ને અહીંયા સોરી એટલે અહીંયા આવશે 0.7 અને અહીંયા આમ જાઓ તમે અહીંયા આમ તો બરાબર અહીંયા આ ગેપ વધી ગયો છે અહીંયા થોડો પણ તમે અહીંયા આમ જાઓ ને તો આ પોઈન્ટ પર આવશે અહીંયા એટલે એ શું થશે તમારું અહીંયા કોમ્પોઝિશન વધી જાય. હા કમ્પોઝિશન વધી છે. આ કેટલું થયું મારું જી હા કમ્પોઝિશન વધી ગયું આ કેટલું થયું મારું 0.015 સોરી 0.15 આને શું કહેવામાં આવશે આને ટાઈ લાઈન કહેવામાં આવશે ટાઈ લાઈન કે આ મિક્સચર છે સેમ ટેમ્પરેચરે બોઇલ થાય છે રાઈટ સેમ ટેમ્પરેચરે બોઇલ થાય છે એમાં બોઇલિંગ ટેમ્પરેચરમાં કોઈ ફેર નથી આવતો રાઈટ. પણ આ મારું શું છે મારું લિક્વિડ છે આ મારું વેપર છે રાઈટ. ડિપેન્ડિંગ અપોન અહીંયા ડિપેન્ડિંગ અપોન કે મારું વેપર કેટલું છે ને લિક્વિડ કેટલું છે બરાબર કે નહીં તો ઈ તમારો આ લાઈન છે એ કયા પોઈન્ટ ઉપર છે એના પર ખબર પડે રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું અલગ ફિગરમાં ડ્રો કરું રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે એટલે સર મોલ નો એટલે બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઘટી જાય એટલે ઈ વર્ટિકલ નહીં દેખાડે. હા આ તો હું ખાલી એક નીચેથી ઉપર ખાલી મેં ટેમ્પરેચર અને એનર્જીના ટર્મમાં મેં લખ્યું હતું ખાલી એનર્જીના ટર્મમાં
બરાબર. ને વર્ટિકલ લખ્યું ને એ ખાલી એનર્જી અને ટેમ્પરેચર ના ટર્મમાં લખ્યું હતું, બરાબર ને? જો હું તને મોટું કરીને એટલે દેખાડું આવી રીતે, ટૂંકમાં એ એમ જ દેખાડે છે ને કે સર કેટલું બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં કેટલો વધારો ઘટાડો થયો ડ્યુ બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં, પોઈન્ટમાં થાય અને એનર્જીમાં પણ તમારું મિક્સચર કોમ્પોઝિશન એનર્જીમાં પણ એનર્જી જેમ જેમ તો ઉપર જતા જશો નીચેથી ઉપર એટલે ઓછી એનર્જી કેટલી વધ્યું. એનર્જી વધતી જશે, રાઈટ? જો હવે હું તમને ફરી વખત સમજાવું કે જો આવી રીતે તમે કહું છે ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ આવી રીતે આમ કહું છે, રાઈટ? એ અહીંયા બરાબર ને, આવી રીતે આમ ટૂંકમાં. હવે આ એક જ બોઇલિંગ એક જ ટેમ્પરેચરે તમારું બોઇલ થાય છે અહીંયા, આ મારી વેપર છે. હવે ડિપેન્ડિંગ અપોન કે મારું કઈ જગ્યાએ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે જો મારું આ પોઝિશન પર હોય, આ પોઝિશન ઉપર ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? તો એ તમારું વેપરની નજીક છે, વેપરના કવથી. તો એમાં શું છે, મને બતાવો મિક્સચર છે ને, મિક્સચર અહીંયા આ મારું ફોર એક્ઝામ્પલ લિક્વિડ છે, રાઈટ? આ લિક્વિડ છે, અહીંયા આ મારી વેપર છે, આ બધી વેપર છે, આ મારું લિક્વિડ છે. તો અહીંયા શું કે ઈ લિક્વિડ ની નજીક છે, સોરી વેપર ની નજીક છે, મતલબ શું કે મિક્સચર ની અંદર વેપર વધુ છે, સમજો? અહીંયા આ પોઈન્ટ ઉપર હોય તો, રાઈટ? અને જો ઈ જ વસ્તુ આ પોઈન્ટ ઉપર અહીંયા હોય, અહીંયા હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, તો મતલબ શું તો લિક્વિડ વધારે, લિક્વિડ ની નજીક છે. તો આ શું છે, મતલબ શું કે અહીંયા તમારું શું કહેવાય, લિક્વિડ વધારે છે તમારું, આ લિક્વિડ વધારે છે એટલું, અને વેપર છે તમારી ઓછી છે. પણ હા, પણ એનો મતલબ એમ છે કે ઈ સેમ ટેમ્પરેચર જ બોઇલ થાય છે, ફેઝ ચેન્જ થાય છે એક જ ટેમ્પરેચરે, બરાબર, રાઈટ? ડિપેન્ડિંગ અપોન કે તારો આ ફીડમાં કેટલું હતું, આ ફીડમાં તમારું એ ઓછું છે, જો ફીડમાં મારું એ વધારે હોત, માનો કે એ છે ફોર એક્ઝામ્પલ મારું 80 હોત ફીડ ની અંદર, અને બી 90 હોત, રાઈટ? બી 90 સોરી બી 20 હોત, 20, તો મોર વોલેટાઇલ કમ્પોનન્ટ વધારે છે, તે ઓછા ટેમ્પરેચરે બોઇલ થશે, તો ક્યાં આવે? અહીંયા આવે. પડી ગઈ ખબર? બરાબર. એ ઓછા ટેમ્પરેચરે બોઇલ થાય, ઓછા ટેમ્પરેચરે બોઇલ થયું, ટેમ્પરેચર ઓછું છે અહીંયા, આ ટેમ્પરેચર. અને જો અહીંયા જો આ જો ફીડમાં તારો એ વધારે હોય, બરાબર ને? ફીડમાં તો વેપરમાં કેટલો એ વધારે છે, ફીડમાં 80% હોય, 80%, और लेट्स से 0.8 मोल फ्रैक्शन હોય ફીડમાં તે તારો, તો વેપરમાં તો એનથી વધારે હોય. તો આ છે તમારું, આ લેટ્સ સે 0.9 ફોર એક્ઝામ્પલ છે, 0.9 અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ, માનો કે આ 1.0 હોય, અહીંયા 1.0, તો અહીંયા 0.9 છે, તો આ છે મારું પોઈન્ટ લખે ફોર એક્ઝામ્પલ 0. લેટ્સ સે 7 કે એવું હોય, તો આ 7 છે માં છે મારું લિક્વિડ ની અંદર છે, આ તમે સેપરેટ કરશો, અહીંયા લિક્વિડ છે, રાઈટ? અને અહીંયા વેપર છે, વેપર છે, બરાબર ને? વેપર ની અંદર કેટલું છે મારું 0.9 હશે, લિક્વિડ ની અંદર 0.75 છે. આ તમારે ખાલી રેન્ડમ ડેટા છે, એ તો તમારી એક્ચ્યુઅલ સિસ્ટમ પ્રમાણે તમારા વેલ્યુ આવે. પાછું એક જ ટેમ્પરેચર પર ઈ તમારું શું થાય છે, બોઇલ થાય છે આ ટેમ્પરેચરે, બરાબર. જેટલું પણ હવે ખબર પડી? બરાબર ને? ઓકે.